हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री को कंटिन्यू करते हुए आई बिगिन विद केमिकल इक्वेशंस. व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन को आप कैसे बैलेंस करेंगे यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड. ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट अ केमिकल इक्वेशन. चिल्ड्रन, अ केमिकल चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल इक्वेशन. सपोजिंगली केमिकल चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है बाय अ केमिकल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला. सपोजिंगली आपसे कहा जाए कि सोडियम इज एडेड टू अ ग्लास ऑफ वाटर. अ पीस ऑफ सोडियम is added to water and it forms sodium hydroxide and liberates hydrogen, and depict this chemical change in the form of a chemical equation. Alright, so sodium, you will write like this: added to water will form sodium hydroxide plus liberate hydrogen. Fine. Now, in this equation, what do we have on the left hand side? They are called as reactants. So here on the left hand side, we have reactants, and our reactants are sodium and water. Alright, cold water. And on the right hand side, we have the product जो बना है, the product that is formed. And the product is sodium hydroxide is formed and hydrogen is liberated. A gas liberated is always generally shown by an upward arrow. ठीक है, equation में we can also write the physical state of the reactant, like sodium solid is reacting with water liquid to form NaOH liquid and liberates hydrogen gas. The arrow depicts that the equation is moving, or the reaction is moving in the forward direction. So this is how a chemical change is represented with the help of chemical equation. Now the most important thing is that a chemical equation always has to be balanced. हमेशा हमें chemical equation balance करनी है. Alright, because according to the law of conservation of mass, जो mass है, it cannot be created, alright, nor it cannot be destroyed. So based on that, a chemical equation को हमेशा हमें बैलेंस करना है, और बैलेंसिंग के लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं. दैट इज वी कीप ऑन ट्राइंग अनलेस एंड अनटिल वी हिट द टारगेट. ऑलराइट, तो आई विल बी नाउ एक्सप्लेनिंग यू कि आपको इक्वेशन कैसे बैलेंस करनी है. फाइन. So let's take one simple example of balancing the chemical equation. So this is the example that I am writing down here. KClO3 is giving you KCl plus O2. ठीक है, potassium chlorate is giving you potassium chloride and oxygen. This is a simple chemical equation जो आपको बैलेंस करनी है. Now in balancing you have to see कि हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में भी उतने ही हों और प्रोडक्ट साइड में भी उतने ही हों, हर एक एलिमेंट के. फॉर एग्जाम्पल हियर पोटेशियम, दिस इज फर्स्ट एलिमेंट, इसका एक एटम है यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में, और यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में भी पोटेशियम का एक एटम है. क्लोरीन का एक एटम रिएक्शन साइड में है एंड वन एटम ऑन द प्रोडक्ट साइड. ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं. नाउ चिल्ड्रन, आपको जो ये इक्वेशन है इसमें कोई भी, यहाँ पर ये नहीं कि आप O को 3 कर दो. ऑलराइट, यू डोंट हैव टू टच द इक्वेशन. वट एवर यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट बिफोर दैट. यू हैव टू राइट हियर और हियर. बैलेंसिंग के लिए आपको से पहले लिखना पड़ेगा. आपको केमिकल इक्वेशन या केमिकल फॉर्मूला में कोई भी चेंज या इन्हें टच नहीं करना है. ठीक है, सो जनरली यू प्रेफर दैट आप बैलेंसिंग इक्वेशन पेन से लिखें, बैलेंसिंग पेंसिल से करें, किसी और पेन से करें. सो ऑक्सीजन इज 3 हियर, ऑक्सीजन इज 2 हियर. यहाँ पे देखो बेटा ऑड है और यहाँ पर इवन है, तो मेक इट इवन ऑन बोथ द साइड. अगर मैं यहाँ पर 3 लिखती हूँ तो ऑक्सीजन बिकम्स 3 2 जा 6, एंड इफ आई पुट अ 2 हियर, ऑक्सीजन बिकम्स 3 2 जा 6 हियर. तो अब मेरे ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं दोनों साइड में करेक्ट बैलेंस हो गए.
नाउ पोटेशियम और क्लोरीन, जैसे ही आई पुट अ 2 हियर, पोटेशियम के एटम्स भी 2 हो गए और क्लोरीन के एटम्स भी 2 हो गए. टू बैलेंस दैट आई हैव टू पुट अ 2 हियर. सो नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड. दिस इज इक्वेशन नंबर 1, that 2 KClO3 will give you 2 KCl plus 3 O2. Let's talk one more equation. Fe plus H2O, Fe3O4 plus H2. Now this is the equation where iron reacts with steam forming triferric tetroxide plus hydrogen. अब आयरन 1 एटम हियर, आयरन के यहाँ पर 3 एटम्स हैं. ऑलराइट, तो बैलेंस करने के लिए यू विल पुट अ 3. अब आयरन के 3 एटम्स इधर हो गए, 3 एटम्स इधर हो गए. हाइड्रोजन 2 एटम्स हियर, हाइड्रोजन 2 एटम्स हियर. ऑक्सीजन इज 4, ऑक्सीजन इज ओनली 1 हियर. ठीक है, इसको 4 करने के लिए यू पुट अ 4 हियर. तो ऑक्सीजन 4 हो गया. बट जैसे ही आपने यहाँ पे 4 लिखा, आपका हाइड्रोजन 4 2 8 एटम्स हो गए. तो अब आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना होगा. तो आपको यहाँ पर भी यू विल हैव टू पुट अ 4 हियर. सो 4 2 8 हाइड्रोजन. एंड नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड. 3 iron atoms here, 3 iron atoms here. 4 2 8 hydrogen, 4 2 8 hydrogen. 4 oxygen, 4 oxygen. So this is how you'll balance the second equation. Now, let's take another example. Equation number 3. ZnS plus O2 will give you ZnO plus SO2. Alright, zinc sulfide plus oxygen is giving you zinc oxide plus sulfur dioxide. Alright, now here zinc is 1 atom. यहाँ पर भी zinc 1 atom. Alright, सल्फर 1 एटम, सल्फर 1 एटम. ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 प्लस 1 3 है. ऑलराइट, तो बेटा यहाँ पर ऑड नंबर हो गया, यहाँ पे इवन नंबर हो गया. तो इनको एक जैसा करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 लिखना होगा. सो दैट माई ऑक्सीजन बिकम्स 2 प्लस 2 4. एंड टू मेक इट 4 हियर आई पुट अ 2 हियर. ठीक है, तो ऑक्सीजन हो गया 2 2 4. बट जैसे ही मैंने यहाँ पर जिंक लिखा तो जिंक मेरा हो गया 2. ऑलराइट, तो जिंक को 2 करना है बिकॉज इट्स अ हिट एंड ट्रायल मेथड. तो मैंने जिंक को 2 किया, अब जिंक 2 हुआ. अब एक और प्रॉब्लम आई, जैसे ही मैंने यहाँ पर 2 लिखा, सल्फर हैज ऑल्सो बिकम 2. तो अब सल्फर को बैलेंस करना है, तो मैंने यहाँ पर सल्फर 2 कर दिया. ठीक है, नाउ एज सून एज आई पुट अ 2 हियर, ऑक्सीजन हो गया 2 2 4 प्लस 2 6. ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 काट कर आई विल पुट अ 3 हियर. So that oxygen becomes 3 2 6. That's why ये hit and trial method होता है. अब equation balance हो गई. 2 zinc, 2 zinc, 2 sulfur, 2 sulfur. Alright, 3 2 6 oxygen and 2 plus 4. That makes 6 oxygen on this side. Now let's take one more example. Equation number 4. Now this is Na, sodium, combines with H2O to form sodium hydroxide plus hydrogen. Again, if you see, sodium 1 on the reactant side, 1 on the product side, 1 atom. Hydrogen 2 on the reactant side, but product side में 2 plus 1 3. ठीक है, तो बेटा इधर फिर आपका ऑड नंबर हो रहा है. सो पुट ऑफ 2 हियर, तो ये 2 प्लस 2 4 हो जाएगा. एंड यू विल पुट अ 2 हियर सो दैट हाइड्रोजन बिकम्स 2 2 4. ठीक, ऑक्सीजन आपका 2 है, ऑक्सीजन 2. अब प्रोडक्ट साइड में देखो सोडियम भी 2 हो गया है. व्हेन यू हैव पुट अ 2 हियर, तो आप सोडियम को यहाँ पर 2 कर देंगे. So now it's 2Na, 2H2O, 2NaOH plus H2. So this equation is also balanced. ठीक है, okay. Moving on to next equation. Equation number 5. C10 H16 plus Cl2 is giving you C plus HCl. Supposingly this is your equation. Alright, so if you see the equation, it's carbon
10 on the reactant side, कार्बन के 10 एटम्स, हाइड्रोजन के 16 एटम्स. यहाँ पे कार्बन का सिर्फ एक एटम, तो यहाँ पर 10 करने के लिए you'll put a 10 here. So कार्बन के 10 एटम्स हो जाते. ऑलराइट. नाउ हाइड्रोजन यहाँ पर बेटा 16 था और यहाँ पर सिर्फ 1 है. ऑलराइट. तो आपको हाइड्रोजन को 16 करने के लिए यहाँ पे 16 लिखना होगा. तो 16 हाइड्रोजन. क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 16 है. 16 करने के लिए आपको यहाँ पे 8 लिखना होगा. 8 2 जा 16. सो कार्बन इज 10, कार्बन इज 10. क्लोरीन 16, क्लोरीन 16. हाइड्रोजन 16, हाइड्रोजन 16. एंड दिस बैलेंसेस दिस गिवन इक्वेशन. ठीक है. फाइन. Another example, Zn plus KOH is giving you K2ZnO2 plus H2. Supposingly, this is your equation. Again, see, zinc 1 atom here on the reactant side and zinc 1 atom on the product side. Now let's talk about potassium. 1 atom और यहाँ पे potassium के 2 atoms. Alright. So let's make it 2 here. Now oxygen 2, oxygen 2, hydrogen 2, hydrogen 2. So the equation becomes balanced. Zinc 1, potassium 2, potassium 2, oxygen 2 and hydrogen 2, and the equation is easily balanced. Okay. Now 7th equation. PBS, alright, so the black pen, PBS lead sulfide, alright, reacts with oxygen plus O2, is giving you PBO lead oxide plus SO2 sulfur dioxide. Now if you look at the equation, this is lead oxide combining with oxygen to give you lead sulfide, oxygen, lead oxide and sulfur dioxide. 1 lead atom here, 1 lead atom this side, 1 sulfur, 1 sulfur, oxygen 2 here, oxygen 2 plus 1, 3 here. So let's make it 4. So if I put a 2 here, oxygen becomes 2 plus 2, 4. Alright. तो यहाँ पर जब when I wrote a 2 here, मेरा lead भी 2 atoms हो गए, तो I'll put a 2 here. अब lead 2 atoms हो गए. अब जैसे ही मैंने यहाँ पर 2 लिखा, सल्फर भी 2 atoms हो गए, तो अब मुझे सल्फर को भी 2 करना होगा, तो I'll put a 2 here. ठीक है. To make sulfur 2. जैसे ही I put a sulfur here 2, ऑक्सीजन हो गया 2 to the 4 plus 2 6. So I have to put a 3 here so that my oxygen becomes 3 to the 6 and the equation gets balanced. Lead 2, sulfur 2 atoms, oxygen 6 and oxygen 2 plus 2 to the 4 makes 6 atoms of oxygen this side. Okay? So this is also balanced. So now I'll give you 3 equations to balance on your own. ठीक है. आप होमवर्क में इन्हें बैलेंस करेंगे और आप मुझे कमेंट बॉक्स में इनको बैलेंस करके बताएंगे. So the first equation is CaOCl2 plus NH3 will give you CaCl2 plus H2O plus N2 nitrogen. This is the first equation. The second equation that you have to balance on your own is Al plus H2O will give you Al2O3 plus H2. And the third equation is CuO plus NH3 will give you Cu plus N2 plus H2. So please try it on your own and I'm sure you'll be able to do it. Thank you very much.